Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on American literature. We have been discussing American literature for the past few days. Today is the fourth part of the video series Amazing America. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal state examination. I have 3 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. These are the timings of your classes. Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Good evening, Singh Saab, welcome. Yes, now I am much better. Okay, so चलो start करते हैं. Today we will talk about major 3 important writers, Benjamin Franklin, James Fenimore Cooper and Washington Irving. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. So the first important writer which we are going to discuss, that is Benjamin Franklin. 1706 to 1790 is his timeline. Benjamin Franklin. So in the field of early American writers, Benjamin Franklin is a very important person. तो वो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे एंड बट लिटरेचर में भी उनका बहुत सारे वर्क है. तो हम बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का. ठीक है, ओके. Okay. So Benjamin Franklin, first of all, his biographical details. He was born on 17th January 1706 in Boston. He was the founding father of USA. This is very important. He was called the founding father of USA. Basically, Benjamin Franklin was a scientist. He was famous for his study on electricity. He published a particular journal जिसका नाम था Pennsylvania Gazette. This is the important journal which was inspired by the Spectator. Spectator, you all know, the journal started by Addison and Steele. तो स्पेक्टेटर से वो इंस्पायर्ड थे, मतलब इस पर्टिकुलर जर्नल इंस्पायर्ड थे, द पेंसिल्वेनिया गेजेट. एंड एक दूसरे कंट्रीब्यूशन था उनका, ही हेल्प टू ड्राफ्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस एंड उसमें जो डिक्लेरेशन था वो डिक्लेरेशन लिखने में हेल्प किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही was known as the first American for supporting colonial unity. He was the first person who spoke for colonial unity, colonial the unity of America as a nation. Benjamin Franklin supported that. Now coming to Benjamin Franklin's important works. तो बहुत शॉर्ट में हम जान लेते हैं बिकॉज इससे बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं आते, बट यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ द ऑथर एंड द मेजर वर्क्स. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है पुअर रिचर्ड्स एल्मनक. It is a kind of a series of prose or essays, you may say. So it was published also serially 1732 to 1758. इतने टाइम से ये पब्लिश हुआ था serially. It was a series of prose pieces and he published it under the pseudonym Richard Saunders. Under the pseudonym Richard Saunders. Yes, colonial unity against British, absolutely.
against British and all other colonial forces. So he supported the unity of North and South America, matlab whole America as a nation. And he believed that this unity was necessary to fight against the British officials. Yes. So it was written under the pseudonym Richard Saunders. So that was his pseudonym. Remember that. Now, in the title, it is mentioned Poor Richard's Almanac. So, almanac का क्या meaning है? Almanac means it is a mixture of documents, weather reports, puzzles, household tips, etc. So you may say it is a multi-purpose magazine जिसमें कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं होता है, बस सभी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर मिलते हैं. Mixture of different kinds of documents, including weather reports, including puzzles, household tips, कोई भी अगर मेजर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कोई आर्टिकल, तो जैसे न्यूज़पेपर में होता है कि वेराइटीज ऑफ चीजें हमें मिलते हैं, नॉट ओनली द पॉलिटिकल न्यूज बट ऑल्सो द जॉब वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, some film reviews, book reviews. So all these are part of newspaper. Similarly, almanac is that kind of thing. So it was written under the pseudonym of Richard Saunders, and this particular idea of writing a work which is based on एक मतलब आप कह सकते हो कि पोएटिक पर्सोना, तो ये पूरे के पूरे आइडिया उन्होंने जहां से लिया था वो था बेस्ड ऑन आइजक बिकरस्टैफ. यू रिमेंबर आइजक बिकरस्टैफ वाज द pseudonym of Jonathan Swift. So Bickerstaff Papers sorry, Bickerstaff Papers Jonathan Swift ने लिखा था. So it was partly based on that particular thing, Isaac Bickerstaff and his Bickerstaff Papers. Now this series of prose work is very important because there are so many important lines जो कि American history में जो proverb बन गए, तो बहुत important lines थे. कौन कौन से लाइन्स थे? जैसे lost time is never found again. These are all very valuable words which we also say today, right, as a proverb. Fish and visitors stink in 3 days. Early to bed and early to rise सबसे important है जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं. That is actually written by Benjamin Franklin in the collection, in the series of prose pieces, Poor Richard's Almanac. Okay. Now next, तो बस यही उनका मेजर वर्क है, पुअर रिचर्ड्स एल्मनक, एंड ही हेल्प्ड टू आइडेंटिफाई he helped to draft the Declaration of Independence during the independence movement of America. Okay, चलो नेक्स्ट राइटर पे आते हैं, जेम्स फेनीमोर कूपर 1789. अच्छा, इग्नोर दिस इमेज. 1789 to 1841 is his timeline. James Fenimore Cooper. Okay, J.F. Cooper. So James Fenimore Cooper was born on 15 September 1789 in New Jersey. He studied at Yale University. Okay, these are basic biographical details. He became midshipman in US Navy. He founded a very interesting club, that is Bread and Cheese Club. तो नेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना, ब्रेड एंड चीज क्लब. So Fenimore Cooper was not very well received among the later American writers or major American writers. For example, Mark Twain criticized Fenimore Cooper. Fenimore Cooper's work, literary offenses. ठीक है. So Mark Twain criticized Fenimore Cooper in his work, Literary Offenses. It is the name of an essay written by Mark Twain. तो जहां पर उन्होंने criticize किया था Fenimore Cooper. And there was a very interesting story that how Fenimore Cooper started writing novels. वो राइटर कैसे बने? तो इसके पीछे एक स्टोरी ये है कि he and his wife both were very fond of reading novels. So one day he was reading a particular novel to his wife, and while reading the novel his wife also felt very boring and he also felt very boring.
So then he threw the novel and promised to his wife that don't read such kind of novel. I will write much better novel for you, which will be worth reading. तो बस इसी के कारण ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट किया राइटिंग नॉवेल्स. सो वेरी डिवोटेड हस्बैंड हु रोट नॉवेल्स फॉर हिज वाइफ जस्ट टू गिव हिज वाइफ सम प्लेजर. उसके वाइफ को बहुत पसंद था नॉवेल पढ़ना, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने वाइफ को कि आई विल राइट some fabulous novels for you. All the novels, these particular novels which are popular among people, they are not worth reading. For you, I will write special novels. तो ऐसे जेम्स फेनीमोर कूपर ने राइटिंग स्टार्ट किया. तो उन्होंने कुछ स्पेशल नॉवेल्स लिखा फॉर हिज वाइफ. So the first important novel is Precaution, published in 1820. Setting है Northamptonshire, and this particular novel was modeled on Jane Austen's work. तो जेन ऑस्टिन के जो मतलब प्राइड एंड प्रेजुडिस का हो या फिर जो अदर फेमस नॉवेल है, दोज आर सेट इन द डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंग्लैंड. तो उसमें नॉर्थैम्पटन शायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो जेम्स फेनीमोर कूपर इज एन अमेरिकन बट स्टिल उन्होंने नॉर्थैम्पटन शायर में अपनी नॉवेल को सेट किया. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है द स्पाई, सबटाइटल्ड एज अ टेल ऑफ द न्यूट्रल ग्राउंड. So it was set during the American Revolution, American Independence, 1821 में publish हुआ. And this particular novel, The Spy, who is the spy? Spy का जो नाम है ये भी याद रखना. Spy का नाम है Harvey Birch, who was a real British spy. So it is based on a real life man, a real life spy, that is Harvey Birch. And also there was another source as pointed out by the critics. This particular novel, The Spy, may also be inspired partly by a family friend, John Jay. John Jay was a family friend of Fenimore Cooper. तो उसके कैरेक्टर का भी एक मतलब इम्पैक्ट था on the character on this particular novel, The Spy. Finally, it is proved that Birch is a true patriot. उनको spy बोला गया था, but later it is proved that he was a true patriot. Okay, चलो. और उसके जो important work है, जो सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं, that is the Leather Stocking Tales. 1827 to 1841 is his timeline. The Leather Stocking Tales. So it is basically a series of 5 novels set in the 18th century. Okay, Leather Stocking Tales, though it is talking about tales, but it is not a collection of short story. Rather, it is a collection of 5 novels. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ये 5 नॉवेल कौन कौन सा है, एंड ऑफन टाइम्स यू आर आस्क्ड टू अरेंज द नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकली. ठीक है, 5 लेदर स्टॉकिंग टेल्स को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना ये भी कभी कभी आता है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल दीज 5 नॉवेल्स हैव अ सिंगल कैरेक्टर जिसका नाम है नैटी बम्पू. नैटी बम्पू इज नॉट अ रियल लाइफ मैन, ही इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, एन इमेजिनरी फोक हीरो ऑफ अमेरिका, एन आइडियल मैन. तो नैटी बम्पू को लेकर ये 5 नॉवेल्स लिखा गया है. 5 नॉवेल्स का बस टाइटल याद रखना, टाइटल और सब टाइटल. तो क्या क्या 5 नॉवेल्स है? द डियर स्लेयर or the first war path, the last of the Mohicans. This is the most important work, a narrative of 1757. Okay, the Pathfinder, subtitled as the Inland Sea, the Pioneers, subtitled as the Source of Susquehanna, and the Prairie, a Tale, Prairie, subtitled as A Tale. So these are the 5 novels: the Deer Slayer, the Last of the Mohicans, the Pathfinder, the Pioneers, the Prairie. तो इन 5 नॉवेल को मिलकर बना है द लेदर स्टॉकिंग टेल्स. एंड 5 नॉवेल में बस एक ही कॉमन कैरेक्टर है जो मेन हीरो है नॉवेल का, दैट इज नाटी बम्पू. ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर पे आते हैं. अच्छा, इमेज को इग्नोर करो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर पे आते हैं, दैट इज वॉशिंगटन अर्विंग. published sorry, timeline is 1783 to 1859. Good evening Rajkishore, welcome. Right now I am much better.
but not completely cured. तो मच बेटर फ्रॉम प्रीवियस, आवाज भी ठीक ठाक आ रही, तो अभी ठीक है। जो मतलब थ्रोट प्रॉब्लम था वो अभी खत्म हो गया, बट स्टिल सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। Okay, so Washington Irving 1783 to 1859 is his timeline. So Washington Irving was born on 3rd April 1783 in New York, and very importantly he was considered the father of American literature. उनको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, अमेरिकन गोल्डस्मिथ, ऑलिवर गोल्डस्मिथ के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, सो फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एंड अमेरिकन गोल्डस्मिथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही हैज 3 pseudonyms। तो ये याद रखना, 3 pseudonyms था उनका, जियोफ्रे क्रेयन, जोनाथन ओल्डस्टाइल, डिएड्री निकरबोकर। names are very difficult but you have to remember it। 3 important pseudonyms, and उन्होंने जितने भी वर्क्स लिखा है इसी 3 pseudonyms को इधर उधर करके उन्होंने लिखा है। Washington Irving. So Washington Irving was greatly admired by the famous British authors like Byron, Charles Dickens, Mary Shelley. Okay, and he was also a biographer. He wrote biographies of George Washington and and Oliver Goldsmith. So that is why he was compared with Goldsmith also, and he was popularly called as American Goldsmith. तो अब उनके लिटरेरी अचीवमेंट्स में आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, ही स्टार्टेड अ मैगजीन। दिस वाज ऑफन टाइम आस्क्ड इन योर एग्जाम। Salma Gundi is the name of the literary magazine which was started and edited by Washington Irving. He was the founder. Okay, अब आते हैं उनके वर्क में। तो बस थोड़ा बहुत ही आपको याद रखना है इसमें। One important work is the history, a history of New York. It is a kind of historical novel, or you may say chronicle, एक टाइप का chronicle ही है। From the beginning to the world to the end of the Dutch dynasty, एक chronicle की तरह इसको publish किया गया, and this was published under the pseudonym Diedrich Knickerbocker. Okay, then उसके एक दूसरे important work है, that is a collection of short stories and essays, sketchbook of Geoffrey Crayon, published in 1820. And this short story you must have heard, the short story Rip Van Winkle. ये अक्सर सिलेबस में होता है, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में। So Rip Van Winkle is a fantasy story of a man who sleeps for 20 years, similar to the character of Kumbhakarna in Ramayana. So Rip Van Winkle talks about a man who sleeps for 20 years. एंड उसके एक और इंपॉर्टेंट वर्क है, द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो। ठीक है, देन टेल्स ऑफ अ ट्रैवलर विच इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, एंड एक मॉरल स्टोरी उन्होंने लिखा था, डेविल एंड टॉम वॉकर। बस यही है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो अमेरिकन लिटरेचर में जो अर्ली राइटर्स है उसमें बहुत कम चीजें ही आपको पढ़ना है। दीज आर द अर्ली राइटर्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फेनिमोर कूपर, इसके अगले क्लास में हमने डिस्कस किया था हैरियट बीचर स्टो, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था थॉमस जेफरसन, एंड ब्रैड स्ट्रीट। सो दे आर ऑल द स्टार्टिंग अर्ली अमेरिकन राइटर्स। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क तो इनके नहीं है, लेकिन इसके आगे हम जो राइटर्स के बारे में जानेंगे यानी कि कल से, so that writers will be important, the transcendental writers, the dark romantic writers, then the modern American writers जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आते हैं, आर्थर मिलर आते हैं। तो बाकी राइटर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें आपको सभी चीजें डिटेल में पढ़ना। ठीक है, so that is about today's class. We have discussed 3 authors, Benjamin Franklin, James Fenimore Cooper and Washington Irving. ठीक है, तो कल की क्लास में, इन टुमारोज क्लास वी विल टॉक अबाउट, टुमारोज क्लास विल बी एन इंपॉर्टेंट क्लास। इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो पोएट्स थे उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है अमेरिकन लिटरेचर में, जिसमें तीनों नाम बार बार आते हैं, रैल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरो एंड वॉल्ट व्हिटमैन।
So we will discuss them in tomorrow's class. Okay, so that is the end for today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get the notification of all important classes. So we will meet again tomorrow at 8:30 p.m. in the class of Transcendentalism. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.